एवरीवन, आदाब और अभिनंदन। आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल जायसवाल बायोलॉजी में मैं देव जायसवाल एक विज्ञान शिक्षक और आज आपके सामने में उपस्थित हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जायसवाल बायोलॉजी का 13th क्विज का टेस्ट जो क्लास 8 से लेकर 12 तक है। चैप्टर का नाम जो है उस साउंड उसी का ऑब्जेक्टिव इंट्रांस क्वेश्चंस लेकर और आपको मैं ये क्वेश्चंस आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं बता दूं कि ये मां सरस्वती ट्यूशन सेंटर इंस्टीट्यूट अकेडमी जो बीरगंज के नेपाल के गेटवे बीरगंज के वार्ड नंबर 13 राधे में अवस्थित है। उसी के थ्रू जो है और जायसवाल बायोलॉजी चैनल के थ्रू ये सब कंपटीशन होता है और हर एक सैटरडे का दिन 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये कंपटीशन होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 5 से लेकर 8 क्लास के बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है। तो 8 से लेकर 12 बजे तक का जो पार्टिसिपेशन है वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होता है। पर कभी नेटवर्क स्लो होने के कारण आधा घंटा इधर उधर हो सकता है। सो आप ऑनलाइन रहिएगा 11:30 और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक रहेंगे तो हो जाएगा, वीडियो उतना देर तक अपलोड हो जाएगा। सो जितने भी बच्चे लोग जो जीते हैं उन सभी को पुरस्कृत किया जाता है ट्रॉफी, कैश प्राइज एवं सर्टिफिकेट के साथ। सो आप बहुत अच्छे से अपना शोहरत कमाइए, नाम कमाइए और अच्छे से प्रगति कीजिए। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का विकास हो और इसके साथ साथ ही जो कल माघी संक्रांति जो है उसका मैं अपने तरफ से और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट मेरे खुद की तरफ से मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। यही आपको शुभकामना देते हुए अच्छा करिए, यही मैं शुभकामना देते हुए यही प्रार्थना करते हुए भगवान से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सो चैप्टर का नाम जो है वो है साउंड और क्लास जो है वो 8 से लेकर 12 तक 13th quiz contest presented by Jaiswal Biology 2078-2022 goes here. So question number जो है वो है 30 क्वेश्चन नंबर और एक तो क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो पहले था। सो ऑल टुगेदर जो फुल मार्क्स हो गया कितना 30। सो अच्छे से के लिए यही मैं शुभकामना देते हुए अब जो क्वेश्चन है मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, साउंड वेव्स आर, ऑप्शन नंबर जो है दिया गया है पर पहले साउंड वेव्स आर, क्वेश्चन नंबर 1, साउंड वेव्स आर डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स वहां पर दिया गया है इन नेचर। साउंड वेव्स जो है वो कैसे नेचर का होता है? ऑप्शन नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर सी पार्शियली लॉन्गिट्यूडनल एंड पार्शियली ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर डी समटाइम्स लॉन्गिट्यूडनल एंड समटाइम्स ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, the amplitude of a wave is, the amplitude of a wave is, option number A, the distance the wave moves in 1 second, option number A is the distance the wave moves in 1 second, option number B is the maximum distance moved by the medium particles on either side of the mean position. The distance the wave moves in one time period of the wave, option number C or option number D है the distance equal to one wavelength. Okay. Question number 2, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 3 जो क्वेश्चन है वो है when sound travels through air the air particles, और उसके बाद डॉट दिया गया है fill in the blanks है when sound travels through air the air particles, option number A do not vibrate, option number B vibrate but not in any fixed direction, option number C vibrate perpendicular to the direction of wave propagation, option number D vibrate along the direction of wave propagation. And question number 4, sound waves do not travel through, option number A vacuum, option number B solid, option number C liquid, option number D gases.
Question number 5. The minimum distance between the source and the reflector so that an equizard is approximately जो सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम होना चाहिए ताकि इको जो है वो हमको सुनाई दे। ऑप्शन नंबर ए 12 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 21 मीटर। Question number 6. When a wave travels through a medium, fill in the blanks is there. Option number A, energy is transferred at a constant speed. Option number B, energy is transferred in a periodic manner. Option number C, particles are transferred from one place to another. Option number D, none of these. Question number 7. Bats detect the obstacles in their path by receiving the reflected. And then fill the blanks is there. Bats जो है ये पाथ में जो बाटू में कौन सा ऑब्स्टेकल्स किस चीज वहाँ पर है वो डिटेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड कौन सी वेव्स रिसीव करकर। ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन नंबर डी इंफ्रासोनिक waves. Question number 8. Question number 8 is a speed of sound depends upon option number A temperature of the medium, option number B pressure of the medium, option number C temperature of source producing sound, option number D temperature and pressure of medium. Question number 9. Which characteristic is this? We can distinguish between sound having same pitch and loudness. Which characteristic is this? We can distinguish between sound having same pitch and loudness. Option number A tone, option number B note, option number C pitch, option number D timbre. Question number 10. Loud sound can travel a larger distance due to option number A higher amplitude, option number B higher energy, option number C high frequency, option number D high speed. Question number 11. A wave in slinky travels to and fro in 5 seconds. A wave in slinky travels to and fro in 5 seconds. The length of the slinky is 5 meter. The length of the slinky is 5 meter. What is the velocity of wave? Option number A 10 meter per second, option number B 5 meter per second, option number C 2 meter per second, option number D 25 meter per second. Question number 12. Which part of human ear converts sound vibrations into electrical signals? हमारे जो कान है इसके कौन सी पार्ट कन्वर्ट करता है साउंड का वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में? ऑप्शन नंबर ए हैमर, ऑप्शन नंबर बी स्टूडिप, ऑप्शन नंबर सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी कोक्लिया. Question number 13. What do dolphins, bats and porpoise use? What do dolphins, bats and porpoise use? Option number A ultrasound, option number B infrasound, option number C both A and B, option number D none of them. Question number 14.
children under the age of 5 can hear up to children under the age of 5 can hear up to option number A 25 hertz, option number B 25 kilohertz, option number C 20 hertz, option number D 25 megahertz. Question number 15. Reverberation of sound is used in option number A stethoscope, option number B trumpets, option number C megaphone, option number D all of these. Question number 16. To hear a distinct echo, each time interval between the original sound and the reflected sound must be. To hear a distinct echo, each time interval between the original sound and the reflected sound must be option number A 0.2 second, option number B 1 second, option number C 2 second, option number D 0.1 second. Question number 17. A speed V wavelength lambda and frequency f of sound are related as a speed v, wavelength lambda and frequency v of sound are related as option number A lambda is equal to v into f, option number B v is equal to lambda into f, option number C f is equal to lambda into v, option number D v is equal to lambda by f. Question number 18. The speed of sound in medium depends upon option number A frequency, option number B amplitude, option number C wavelength, option number D properties of the medium. Question number 19. Which of the following will remain unchanged when a sound wave travels in air or in water? Which of the following will remain unchanged when a sound wave travels in air or in water? Option number A frequency, option number B wavelength, option number C amplitude, option number D speed. Question number 20. And fill in the blanks is there. Is an example of mechanical wave. नीचे दिए गए कौन से जो है मैकेनिकल वेव के एग्जांपल है ऑप्शन नंबर ए वेव, ऑप्शन नंबर बी लाइट वेव, ऑप्शन नंबर सी साउंड वेव, ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड वेव. Question number 21. We can easily distinguish between the sounds of different singers even without having seen them. This is all due to the different quality or timbre of their sounds. On what factor does the quality of sound depend? Question number 21 is we can easily distinguish between the sounds of the different singers even without having seen them. This is all due to the different quality or timbre of their sounds. On what factor does the quality of sound depend? Option number A wavelength, option number B waveform, option number C wave frequency, option number D wave amplitude. Question number 22. On increasing the temperature, the speed of sound in air. On increasing the temperature, the speed of sound in air, option number A increases, option number B decreases, option number C does not change, option number D first increases then becomes constant. Question number 23. Loudness measures the sound energy reaching the ear per second and depends on the amplitude of the sound wave. Loudness measures the sound energy reaching the ear per second and depends on the amplitude of the sound wave. What is the unit used to measure the loudness of sound? Option number A hertz, option number B decibel, option number C meter per second, option number D second.
Question number 24. Before the main shock waves, the earthquake produces the characteristic sound waves which some animals like rhinoceros can hear. Before the main shock waves, the earthquake produces the characteristic sound waves which some animals like rhinoceros can hear. Can you guess the kind of sound waves produced there? Here. Option number A, infrasonic sounds. Option number B, ultrasonic sounds. Option number C, audible sounds. Option number D, none of these. Question number 24. If the question number 25. If the speed of sound in water is 1500 meter per second, then what is the depth of the sea? If the speed of sound in water is 1500 meter per second, then what is the depth of the sea? Option number A, 6000 meter. Option number B, 3000 meter. Option number C, 15,000 meter. Option number D, 2500 meter. Question number 26. So question number 26 is, which of the following can produce longitudinal as well as transverse waves under different conditions? Which of the following can produce longitudinal as well as transverse waves under different conditions? Option number A, bats. Option number B, slinky. Option number C, tuning fork. Option number D, none of these. Question number 27. If the speed of a wave is 380 meter per second and its frequency is 1900 Hz, then the wavelength of the wave will be. If the speed of a wave is 380 meter per second and its frequency is 1900 second, then the wavelength of the wave will be option number A, 20 meter, option number B, 0.2 meter, option number C, 200 meter, option number D, 2 meter. Question number 28. The bats can fly in the darkness of sound without colliding with the other objects by emitting special sounds while flying. Which characteristics of sound is used by the bats to navigate? Option number A, ultrasound. Option number B, infrasound. Option number C, audible sound. Option number D, none of these. Question number 29. Before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so, he is adjusting. Question number 29 is, before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so, he is adjusting, and there are different so many 4 statements. Number 1 is amplitude of the sound. Number 2 is frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments. Option number 3 is intensity of sound, and option number D is loudness of sound. So choose the correct option. Now option is given there. Option number A, 1 and 2. Option number B, only 2. Option number C, 2 and 4. Option number D is only 4. And this is the last question. And this is the last question, and it is question number 30.
Question number 30 is, this is the last question and it is question number 30. So question number 30 is, a key of mechanical piano is first struck gently and then struck again, but much harder this time. What kind of change is produced? What kind of change in sound will you observe in the second case? Question number 30, this is the last question. And it is, a key of mechanical piano is first struck gently and then struck again, but much harder this time. What kind of change in sound will you observe in the second case? Option number A, sound will be louder but the pitch will not be different. Option number B, sound will be louder and the pitch will also be higher. Option number C, sound will be louder but the pitch will be lower. Option number D, both loudness and pitch will remain unaffected. सो ऐसा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए और फिर हमारी संक्रांति को शुभकामना देते हुए आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि के विकास हो, यही शुभकामना देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं देव जसवाल आपके समक्ष विदा लेना चाहता हूँ। अच्छा से के लिए अर्न करिए, नेम एंड फेम शोहरत कमाइए, यही बोलते हुए नमस्ते, धन्यवाद।